ओके, सो वी हैव व्हाट्सएप पे से निकलना है और पीवीटी ग्रुप्स दो है। ओके, कुछ देर वेट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ कि नेटवर्क अच्छा है और वॉइस अच्छा है। स्टार्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ कि नेटवर्क अच्छा है और वॉइस अच्छा है। ओके, परफेक्ट। ओके, सो आई एम गेसिंग 2 दिन और हमें लगेंगे। 2 दिन में आपका जो ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन गुड पॉसिबिलिटी है कि हम जो है एक बार रिविजन काइंडा कर रहे होंगे, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफ में। दोबारा सब कुछ कंप्लीट करेंगे, है ना? अनलेस आपके कुछ और व्यूज होते हैं। लेट्स सी। जो प्रिसाइज डॉक्यूमेंट मुझे बनाना था वो मैंने ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा जो ये शॉर्ट नोट्स वाला जो डॉक्यूमेंट है ये भी आपको 2 दिन में सेंड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो एक से रुकिए। सो होपफुली ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। अगेन आई अंडरस्टैंड कि आप में से काफी लोगों ने जो इससे पुराने वाले जो ढेर सारे पीडीएफ है ना, जो मैंने ढेर सारे पीडीएफ बनाए हैं, पोस्ट कॉलोनिज्म के ऊपर बात कर लीजिए, किसी भी चीज के ऊपर बात कर लीजिए, वो एक साथ ट्रैक रख पाना बहुत मुश्किल है ना, बिकॉज ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स है। बट देन इस बारे में, इस बार जो हम ये अभी दो लेक्चर के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं एक ही मतलब पीडीएफ में सब कुछ कंपाइल कर दूंगा एक तरह से। तो वो बहुत ही ब्रीफ वे होगा चीजों को पढ़ने का, है ना। मेन आइडियाज ही होंगे उसमें, सिर्फ उतना डिटेल में वो नहीं होगा। बहुत ही ब्रीफली सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुझे आपको ये भी बताना था कि पर्सनली, है ना, नॉर्थ ईस्ट पीएससी की तरफ से नहीं, बट पर्सनली जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें दो चीजें स्टार्ट हो चुकी है। एक है ग्रामर के ऊपर सीरीज। तो अगर आपको ग्रामर के ऊपर, है ना, टेंस के ऊपर या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी चीज है जिसके ऊपर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल। वहीं पे, वहाँ पे एक वोकेबलरी के ऊपर भी मैंने सीरीज स्टार्ट किया है कि जो टॉप 1000, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट 1000 वर्ड्स हैं उनको, उसका एक सीरीज स्टार्ट किया है, ताकि अगले 100 दिनों में आपको जो टॉप 1000 वर्ड्स है वो याद हो जाए, है ना। ऑलरेडी 5 डेज हो चुके हैं, ऑलरेडी 5 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम हर रोज एक सेशन करने वाले हैं जिसके अंदर हम 10 वर्ड्स करने वाले हैं। और इस तरह से विल मेक श्योर कि आने वाले 100 डेज में आपके 1000 वर्ड्स हो जाए। तो ये दो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। चैनल आई विल शो यू, वेट कीजिए। सो ये रहा चैनल। इसके अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो you'll find these वीडियोस, है ना। हमने 3 दिन पहले ये स्टार्ट किया था। सो देखिए, पार्ट 1 वो रहा, पार्ट 2 ये था, पार्ट 3, पार्ट 4, एंड इफ यू क्लिक ऑन लाइव, पार्ट 5 यहाँ पे होगा। आज मैंने लाइव ट्राई किया था। सो और इसके अलावा जो है आपको और भी वीडियोस देखने को मिल जाएगा ग्रामर के टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल वर्ब, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, लिटरेचर के तो इसमें ऑलरेडी है ही है नीचे की तरफ, एलिट्रेशन एक्सेट्रा। फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी मैं एक सीरीज बनाऊंगा, जो एक ही मतलब वीडियो के अंदर सारे के सारे जो लिटरेरी टर्म्स है वो कवर कर दूंगा। या होपफुली, लेट्स सी, है ना, लेट्स सी, क्या पता एक से ज्यादा वीडियो मुझे बनाने पड़े। एनीवे, नाउ लेट्स मूव बैक टू जो हम आज कर रहे हैं, वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो हम लोगों के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो है कुछ ही बाकी है, ज्यादा बाकी नहीं है। आई एम होपिंग कि 1 या 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, एट बेस्ट 3 दिन में। देखते हैं, जब भी ये कंप्लीट होगा तब हमें एक नई तरह से जो है दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे।
सो आपका टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। क्या होता है ये? हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक पीडीएफ कर रखा है। और so the term post-colonialism है ना refers broadly to the ways in which race, ethnicity, culture, and human identity itself are represented in the modern era. देखिए पोस्ट बोला है, पोस्ट कॉलोनिज्म तो जो जिन कंट्रीज को कॉलोनी बनाया गया, जिन कंट्रीज के ऊपर रूल किया गया, उन उन कॉलोनीज के हट जाने के बाद है ना, जब उनके ऊपर और रूल, मतलब उन लोगों ने जब कॉलोनाइजर्स को भगा दिया, उसके बाद का क्या हुआ वहाँ पे, उसके बाद जो रेस का क्या हुआ, एथिनिसिटी का क्या हुआ, कल्चर का क्या हुआ, ह्यूमन आइडेंटिटी का क्या हुआ, ऐसे जगहों पे are represented in the modern era after many colonized countries gained their independence, है ना, independence के बाद का situation. However, some critics use the term to refer to all culture and cultural products influenced by imperialism from the moment of colonization until today. आगे चलते हैं। Post-colonial literature seeks to describe the interactions between European nations and the peoples they colonized. It obvious है बहुत ही. By the middle of the 20th century, a vast majority of the world was under the control of European countries. And then आपको पता है ना 20th century में most जो countries है उन्हें आज़ादी मिल गई थी. At one time, Great Britain, for example, ruled almost 50% of the world. During the 20th century, countries such as India, Jamaica, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Canada, Australia, they won their independence from their European colonizers. एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल, तो देखिए यहाँ से थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, ये वो एग्जाम्पल्स है जो आप दे पाएंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स इंक्लूड एडवर्ड सेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरिएंटलिज्म, है ना. देन वी हैव सलमान रश्दी का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मिडनाइट चिल्ड्रन. दोनों ये भी पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट ही है. देन वी हैव चिनुआ अचाबे का थिंग्स फॉल अपार्ट, ये भी बहुत ही मेजर टेक्स्ट है, स्पेशली अगर आप नाइजीरिया की बात करें या फिर आप अफ्रीका की बात करें. देन वी हैव माइकल ओनदाचे का द इंग्लिश पेशेंट, अगेन ये एक फेमस राइटर है, फेमस पोएट कह सकते हैं आप इन्हें. देन वी हैव फ्रांस फैनन्स द रचेट ऑफ द अर्थ. और फिर एक और है, जमाइका इंकेट्स अ स्मॉल पैलेस, इजाबेल एलेंडेज द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, जे एम कोर्जीज वेटिंग फॉर द बारबेरियंस एंड डिसग्रेस. फिर सेकंड लास्ट है डेरेक वॉलकॉट बहुत ही फेमस पोएट है, ओमरस. एंड लास्ट है इवान बोलैंड्स आउटसाइड हिस्ट्री सिलेक्टेड पोएम्स 1980 से लेकर 1990 के बीच में. तो ये रहे आपके कुछ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट. आप इनमें से हर एक को जो है पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट इसका जो समरी है वो तो आप डेफिनेटली पढ़ ही सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट है, नोटिस कीजिए ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म था. इसके बाद जो हमारे पास है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म. वन पीस एपिसोड नंबर 1066 का ट्रांसलेशन आ चुका है, बट वी आर करेंटली इन अ सेशन, सो मैं वो नहीं पढ़ सकता. इस सेशन के बाद पढ़ लेंगे. ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है ना, मॉडर्निज्म के बाद वाला जो सेगमेंट है, मॉडर्निज्म के खत्म होने के बाद वाला सेगमेंट है. यूजुअली ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद का पूरा सीनरी है. राइटिंग फ्रॉम द 1960s फॉरवर्ड्स Writing from the 1960s forward characterized by experimentation and continuing to apply some of the fundamentals of modernism, which included existentialism, ये बहुत ही important है, and alienation, दोनों ही साथ साथ आते हैं. Postmodernists have gone a step further in the rejection of tradition, begin with the modernists by also rejecting traditional forms, preferring the anti-novel over the novel and the anti-hero over the hero. आपने रिसेंट टाइम पे नोटिस भी किया होगा ना कि फॉर एग्जांपल मूवीज लाइक जैसे जोकर बनी है ना, जोकर मूवी में वी आर वाचिंग एन एंटी हीरो, है ना. या ऐसी जो मूवीज बनती है, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स. एक नाइट वाला वो है ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ इट. इट वाज अबाउट अमेरिकन साइको इज वन ऑफ दैट, है ना, वन ऑफ दोस मूवीज. उसके अलावा नाइट क्रॉलर इज वन ऑफ दोस मूवीज, है ना. सो वी रिसेंट टाइम पे
we are seeing a lot of एंटी हीरो वर्शिप, है ना. मोर लाइक वी वांट टू अंडरस्टैंड कि जो सामने वाला पर्सन है, जो बहुत ही ब्रोकन है, डिजीज है ना, या सफरिंग से गुजर रहा है, उसकी भावनाओं को, है ना. इवन दो वो गुड फीलिंग, वो बहुत ही प्योर या फिर बहुत ही सलीन पर्सन की तरह नहीं आ रहा ना. सो वी आर मोर ऑफ रियलाइजिंग कि सामने वाला पर्सन रियल है ना. वो सफरिंग के थ्रू जा रहा है, बैड मोमेंट से थ्रू जा रहा है, एंड द चॉइसेस दैट ही टेक्स, है ना. So postmodernists have gone a step further in the rejection of tradition. Begin with the modernists also by also rejecting traditional forms, preferring the anti-novel over the novel and the anti-hero over the hero. Postmodern writers include Alan Robert Gillett, Thomas Pynchon, Margaret Drabble, John Fowles, Adolfo Bio sorry, Casares, and then Gabriel Garcia Marquez. ये बहुत ही फेमस है, as you all know. नेक्स्ट पे आते हैं. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना. देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, दोनों के ऊपर ही आपको शॉर्ट नोट डेफिनेटली आ सकता है. नेक्स्ट है प्रिमिटिविज्म, सॉरी, primitivism, the belief that primitive people were nobler and less flawed than civilized people because they had not been subjected to the to the tainting influence of society. मतलब जो हमारे पहले वाले लोग पूर्वज थे, और जो हमारे पूर्वज थे ना, प्रिमिटिव पीपल जो थे, वो हमसे ज्यादा बेटर थे. दे वर बेटर देन मी, है ना. दे वर लेस फ्लॉड देन सिविलाइज्ड पीपल, है ना. अगर ये धारणा है, तो ये धारणा कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? प्रिमिटिविज्म में. Examples of literature espousing primitivism include Afra Ben का हमारे पास है, Ororonoko, Ororonoko. As you see, Ororonoko में it was all about dealing with that punishment, है ना. Ororonoko के साथ कितना बुरा किया गया, especially more civilized लोगों ने ये किया, है ना. और the history of the royal slave, इसे देखिए. Okay, let's move on. And then we have John Jean Jacques Rousseau's Julie Ola Novelle Heloise, Oliver Goldsmith का The Deserted Village, ये अच्छा है. The poems of Robert Burns, Herman Melville's stories, for example. Type Omo Mardi, many poems of William Butler Yeats, हाँ ये भी शो करता है ऐसा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमारे पास, एंड विलियम गोल्डिंग का नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सॉरी, फायरफ्लाइज, वो तो एक जापानीज मूवी है. सो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग का. ओके, सो ये रहा आपका प्रिविटिज्म. अगेन इस हर एक में शो करता है कि जो सिविलाइज्ड लोग हैं, दे आर मोर वायलेंट, दे आर मोर इनटू डिस्ट्रक्शन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. अगेन ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आपने देखा था कि वर्ल्ड वॉर का सेटिंग था, वर्ल्ड वॉर में सब कुछ खत्म हो गया, एंड देन कि कैसे वी सी कि कैसे जो वो छोटे बच्चे हैं, दे दे लाइक व्हेन दे लैंड ऑन दैट पर्टिकुलर आइलैंड, दे आर स्टिल इनटू chaos, है ना. They try to form a society, they try to form some form of government, I would say, more like. But at the end, find themselves into anarchy, you know, into chaos, and they strike, and they eventually do kill some of the other kids, है ना. एंड ये अच्छी बात नहीं है. सो इट शोज कि जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो इन मोर वेज मोर फ्लॉड है कंपेयर टू जो प्रिमिटिव लोग हैं, है ना. सो जब भी ऐसी स्टोरी आएगी, ऐसी कोई स्टोरी आएगी, देन विल इट्स मोर लाइक प्रिमिटिविज्म. नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टिव वर्स. क्या होता है? Again, a form of poetry, a form of free verse in which the poet's breathing pattern determines the lines of the poetry. Poets who advocate projective verse are against all formal structures in writing. अब ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, इंक्लूडिंग मीटर एंड फॉर्म, ये इन सब चीजों को नहीं मानते. Besides, its creators, Robert Creeley, Robert Duncan, Charles Olson, and two other well-known projective verse poets are Dennis Levertov and Leroy Jones. Okay, also known as breathe verse. तो breathe verse again नाम से ही पता चलता है इसका, इसमें क्या होने वाला है. एंड दूसरा है projective verse, दोनों सेम ही है.
अगेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गुड पॉसिबिलिटी कि ये तो आपको शॉर्ट में शॉर्ट नोट में नहीं मिलने वाला, बट इट्स गुड टू नो अबाउट इट, है ना। इट्स गुड टू नोट कि ये क्या होता है ना, ब्रीथ वर्स क्या होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ फ्री वर्स इन विच द पोएट्स ब्रीदिंग पैटर्न डिटरमाइंस द लाइन्स ऑफ द पोएम। नेक्स्ट वी हैव प्रोलॉग, पर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। क्या होता है एक प्रोलॉग? वेट कीजिए। ओके, so एक prologue क्या होता है? An introductory section of a literary work. So we have prologue, we have epilogue, है ना। So जब introduction में होता है, जो बिल्कुल starting में होता है, pro, है ना, बिल्कुल starting में जो हमारा वो होता है section, उसे हम कहते हैं prologue। And introductory मतलब introduction वाला section of a literary work, it often contains information establishing the situation of the characters or presents information about the setting, time period, or action. In drama, the prologue is spoken by a chorus. Again, chorus हम already explain कर चुके हैं ऊपर, or by one of the principal characters. In the general prologue of the Canterbury Tales, आपने notice किया होगा, जॉफरी चौसर का जो character होता है ना, describes the main characters and establishes the setting and purpose of the work. तो ये रहा आपका prologue. Usually इसको सॉरी कोरस या फिर कोई मेन कैरेक्टर जो है वो इसको सुना रहा होता है। नेक्स्ट आपका है प्रोज। अगेन इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट डेफिनेटली आ सकता है। प्रोज क्या होता है? अ लिटरेरी मीडियम। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, है ना। सो अ लिटरेरी मूवमेंट, सॉरी अ लिटरेरी मीडियम दैट, एक्चुअली यहाँ पे मार्क करता हूँ ना, अ लिटरेरी मीडियम दैट attempts to mirror the language of everyday speech. So one we have poetry, and poetry के अंदर what we do, we include a lot of figurative language, है ना, we include a lot of figure speeches, etc etc। हम फॉर्म का ख्याल रखते हैं, मीठे का ख्याल रखते हैं, हम उसे बहुत प्रिसाइज बनाते हैं, है ना। एक आइडिया को उस पोएम के थ्रू जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो इवन दैट शॉर्ट poem has a lot to it. Prose, on the other hand, is everyday language, है ना, we just write, it's like we're writing paragraphs. So there's a difference between prose and poetry. The language of everyday speech. It is distinguished from poetry by its use of unmetered, unrhymed language. है ना? So when we are writing prose or writing in prose, we are not thinking about meter. है ना? We are not thinking about कि ये rhyme कर रहा है कि नहीं, है ना? Consistently of logically related sentences. Prose is usually grouped into paragraphs that form a cohesive whole such as an essay or a novel. वेट कीजिए यहाँ पे, गिव मी मोमेंट यहाँ पे। इससे पहले कि हम आगे जाए, गिव मी 2 मिनट्स, है ना। सरप्राइजिंग कि वी हैव 4 पीपल हियर। यूजुअली हमें 4 पीपल का स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलता है किसी जनरल वाले क्लास में। जनरल क्लास में वी सी अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 30-40, है ना, इवन इट गेट्स टू 60, बट पीजीटी में पहली बार, ओके, सो आई एम गेसिंग वो ऐसे ही लोग होंगे। सो बैक टू वेयर वी वर। हाँ, तो इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पोएट्री by its use of unrhymed, unmetered language consisting of logically related sentences, है ना, logically related sentences होते हैं। Prose is usually grouped into paragraphs and that form a cohesive whole such as an essay or novel, है ना। अगर आपको ऐसे के बारे में काफी कुछ जानना है तो you have our Monday, Wednesday and Friday session। इट इज ऑल अबाउट ऐसे। हमारा खत्म होने वाला है, जैसे 1 या 2 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा वो ऐसे वाला सेक्शन भी, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल। ओके, सो recognized masters of English prose writing include सर थॉमस मैलोडी, बहुत पुराने, विलियम कैक्सटन, स्टार्टिंग किया था इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, राफाएल हॉलिंशेड, जोसेफ एडिसन, मार्क ट्वेन, वेरी फेमस, एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनके इनके वर्क्स के ऊपर करंटली मैं रिसर्च कर रहा हूँ। Okay, now with the next thing, next short note, protagonist.
क्या इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी हु सर्व्स एज अ फोकस फॉर इट्स themes and incidents and as the principal rationale for its development. The protagonist is sometimes referred to in discussions of modern literature as the hero or anti-hero. So protagonist can be anyone है ना. देखिए हीरो और एंटी हीरो में there's a difference. बट प्रोटैगनिस्ट जो है वो आपका हीरो एंटी हीरो दोनों ही हो सकता है. Well known protagonists are Hamlet, for example. Hamlet है we have Hamlet and William Shakespeare's Hamlet and J. Gatsby. ये आपने अगर देखा है द ग्रेट गैट्सबी, या जैसा मूवी ऑल्सो जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है वो द ग्रेट वो बनते हैं ये गैट्सबी. सो इन विच जे गैट्सबी इन एफ स्कॉट फिट्जgerald's द ग्रेट गैट्सबी. नेक्स्ट इज प्रोटेस्ट फिक्शन. अगेन दो शॉर्ट नोटिस पे आपको डेफिनेटली आ सकते हैं. प्रोटेस्ट फिक्शन नाम से ही पता चल रहा है. इट हैज अ प्रोटेस्ट फिक्शन has has as its primary purpose the protesting of some social injustice, such as इसमें रेसिज्म आ सकता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है, कुछ भी है ना, किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट. One example of protest fiction is a series of 5 novels by Chester Hills, beginning in 1945 with "If He Hollers, Let Him Go" and ending in 1955 with the primitive, जो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है. These works depict the destructive effects of race and gender stereotyping in the context of interracial relationships. Another African American author whose works often revolve around the themes of social protest is John Oliver's Killens, and James Baldwin's essay Everybody's Protest novel generated controversy by attacking the authors of protest fiction. तो ये रहा आपका प्रोटेस्ट फिक्शन. नेक्स्ट वी हैव प्रोवर्ब. ये तो ऐसे ही है, आपको बस नॉलेज देने के लिए है. अ ब्रीफ सेज सेइंग, सेज का कहानी, सेज सॉरी सेज का बोलना, दैट एक्सप्रेसेस अ ट्रुथ अबाउट लाइफ इन अ स्ट्राइकिंग मैनर, है ना. दे आर नॉट ऑल कुक्स हु कैरी लॉन्ग नाइफ्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोवर्ब. ओके, नेक्स्ट है आपका सुडोनिम. इसके ऊपर आपको डेफिनेटली शॉर्ट नोट आ सकता है. ओके, बिफोर वी स्टार्ट दिस, इसमें 2 मिनट का पॉज लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना. सुन. चलिए आगे चलते हैं. सो वी वर डूइंग सुन. क्या होता है? सो बहुत लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अब तक सुडोनिम यूज किया है. इट्स अ नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर फॉर वेरियस रीजंस, है ना. हो सकता है उसे प्यारी फनी है, हो सकता है उसे, यूजुअली लड़कियों को ये होता था कि ना दे वांट टू हाइड देयर आइडेंटिटी, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू टेक अ सुडोनिम, है ना. जिससे जो कॉमन लोग हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनको ये पता ना चले कि ये एक लड़की ने लिखा है, और वो उसे डिस्क्रेडिट ना कर दे. तो दे यूज्ड टू राइट, है ना. कभी कभी आपको जो है अगर आप कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लिख रहे हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्क लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सलमान रश्दी ने एक पॉइंट पे ये किया था. सो व्हेन यू राइटिंग अ पर्टिकुलर बुक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, यू डोंट वांट टू बी रिप्रेजेंटेड विद दैट पर्टिकुलर बुक, है ना. यू वांट टू फर्स्ट चेक कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है. सो देन यू यूज अ pseudonym.
So, a name assumed by a writer, most often intended to prevent his or her identification as the author of the work of a work. Two or more authors may work together under one pseudonym, or an author may use a different name for each genre he or she publishes in. एक गुड एग्जांपल इसमें जॉनसन स्विफ्ट भी होने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने भी जब गुलिवर्स ट्रैवल्स लिखा था तो वो and then I guess modest proposal. I'm not exactly sure about modest proposal, but I'm sure about Gulliver's Travel. जब उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपने नाम से पब्लिश नहीं किया था. Okay, two or more authors. Some publishing companies maintain house pseudonyms under which any number of authors may write installations in a series. Some authors also use a pseudonym over their real names, the way in the way an actor may use a stage name. Okay, एग्जाम्पल दे रखे हैं आप स्टूडेंट्स के, आपको ये याद रखने हैं. फर्स्ट वी हैव सो या विद द ऑथर्स रियल नेम इन पेरेंथेसिस. सो आपको वोल्टेयर, आपने बहुत सुना होगा वोल्टेयर के बारे में. उनका जो असली नाम है वो है फ्रांसोइस मैरी आरवेट. देन वी हैव नोवालिस. कौन है ये? फ्रेडरिक वॉन हार्डनबर्ग. देन वी हैव क्यूररवेल, बहुत ही फेमस है ये. क्यूररवेल इज शार्लेट ब्रॉन्टे. गिव मी अ मोमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव फ्रेडरिक वॉन हार्डनबर्ग, जिन्हें हम नोवेलिस्ट के नाम से जानते हैं. वी हैव फ्रांसिस फ्रैंकोइस मैरी एरुएट, जो बहुत ही फेमस है, वोल्टेयर. देन वी हैव थ्री नेम्स, है ना. एक्चुअली यहाँ पे थ्री नेम्स ले नहीं रखे हैं, बट स्टिल वी हैव ट्यूडर बेल, जिसे हम शार्लेट ब्रॉन्टे कहते हैं. वी हैव एलिस बेल, जहाँ पे जिन्हें हम एमिली ब्रॉन्टे के नाम से जानते हैं. दे आर सिस्टर्स. एंड देन एक और है एन ब्रॉन्टे, एक्टन बेल, है ना. सो एक है ट्यूडर बेल, एलिस बेल, एक्टन बेल. ट्यूडर बेल इज शार्लेट ब्रॉन्टे, एलिस बेल इज एमिली ब्रॉन्टे, एंड इनकी एक छोटी बहन है हु इज एक्टन बेल, जिनका असली नाम है एन ब्रॉन्टे. देन वी हैव जॉर्ज एलियट. ये बहुत ही फेमस है जॉर्ज एलियट. एमिली ब्रॉन्टे इज नोन फॉर हर वेदरिंग हाइट्स. शार्लेट ब्रॉन्टे इज फॉर इनके दो वर्क्स एक्चुअली. एक है प्रोफेसर, जो इनका फर्स्ट वर्क है. एंड देन वी हैव जो इनका जेन आईडी है. इसके अलावा वी हैव मैरी एन इवेंस. यहाँ पे गैप है, मैरी एन इवेंस वो, और इनका जो सूडोनेम है वो है जॉर्ज एलियट. देन वी हैव ऑनरियो बुस्तो डॉनिक. डॉनिक, इनका असली नाम है अडोल्फो बायोस, सॉरी बायो कसारेस, एंड जॉर्ज लुइस बोगेस. तो आगे से दो नाम है. ओके, एंड देन फाइनली वी हैव स्टीफन किंग, जिनको हम कहते हैं रिचर्ड बैचमैन. तो ये रहे कुछ नाम जो कि सूडोनेम में यूज हुए हैं. आप इनको एज एन एग्जांपल जो है सब जगह लिख सकते हैं. जॉर्ज एलियट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं पन. पन क्या होता है? पन इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स, है ना. अगेन हम लोगों ने जब लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कर रहे थे, तब ये आया था. तब इसके ऊपर हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था. सो पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स. सिमिलर साउंड है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है. A simple example of the pun is from John Donne's A Hymn to the God the Father. वहां पे ये सेंटेंसेस है: swear by thyself that at my death thy son या फिर son shall shine, and he shines now and heretofore, and having done that thou hast done, I fear no more. So a play of words is like double meaning, है ना. कि आपने वर्ड्स बोला और एक का मीनिंग कुछ और है, बट देन इंटेंडेड मीनिंग कुछ और है ना. रेफर्ड मीनिंग और इंटेंडेड मीनिंग दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है. तो वो हो जाता है मोड ऑफ अ पन. नेक्स्ट इज प्योर पोएट्री. अगेन जरूरी नहीं कि ये आपको शॉर्ट नोट में आएगा, बट अगेन जान लेने में कोई बुराई नहीं है. पोएट्री विदाउट poetry written without instructional intent or moral purpose, that aims only to please a reader by its imagery or musical flow, इसे हम कहते हैं pure poetry. So there is no aim, more like, है ना.
The term pure poetry is used as an antonym of the term didacticism. The poetry of Edgar Allan Poe, Stephen Mallarmé, Paul Verlaine, Paul Valery, Juan Ramos Jimenez, George Gillian, often examples of pure poetry. है ना? So they were made with the aim to only please a reader by its imagery or musical flow. नेक्स्ट ऑब्वियसली इसके ऊपर भी आपको दो शॉर्ट आउट कर सकते हैं क्वार्टरिन क्या होता है फोर लाइन स्टैंजा है ना आप आपने सोनेट के अंदर जो देखा है यूजुअली जो शेक्सपियर सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वी हैव थ्री क्वार्टरिन्स एंड फॉलोड बाय अ कपलेट सो फोर लाइन स्टैंजास ऑफ अ पोएम और एन एंटायर पोएम कंसिस्टिंग ऑफ फोर लाइन्स से हम क्या बोलेंगे क्वार्टरिन द फॉलोइंग क्वार्टरिन इज फ्रॉम रॉबर्ट हेरिक्स टू लिव merrily and to trust to God verses. Round round the root does run, and being ravished thus come, I will drink a ton to my properties. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है रेजोन्योर अगेन नॉट रियली ये एग्जैक्टली जो है गुड पॉसिबिलिटी ये नहीं है क्वेश्चन में बट स्टिल इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन अ कैरेक्टर इन ड्रामा whose function as a spokesperson for the dramatist's views एक सेकंड रुकिए गिव मी अ मोमेंट यहाँ पे ओके सो दैट तो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट नोट है ये है रेजोन्योर क्या होता है a character in a drama whose functions as a spokesperson for the dramatist's views the reasoners the reasoner typically observes the play without becoming central to its action reasoners were very common in plays of the 19th century तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं spokesperson नेक्स्ट चलते हैं रियलिज्म इसके ऊपर भी हम लोगों ने पूरा पीडीएफ कर रखा है क्या होता है 19th century European a 19th century European literary movement that sought to portray familiar characters, situations, and settings in a realistic manner, है ना? Realism. This was done primarily by using an objective narrative point of view and through the build-up of accurate detail. The standard for success of any realistic work depends on how faithfully it transfers common experience into fictional norms. The realistic method may be altered or extended in stream of consciousness जो आपको ऑलरेडी पता है हम लोगों ने ये पढ़ रखा है stream of consciousness writing to record highly subjective experience. Seminal authors in the tradition of realism कौन-कौन है? Honoré de Balzac, we have Gustave Flaubert, and then we have Henry James जो बहुत ही famous dramatist है. So ये है आपके realism. नेक्स्ट है रिफ्रेन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर पहले भी शॉर्ट नोट आ चुका है और डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रेन क्या होता है रिफ्रेन अ फ्रेज रिपीटेड एट इंटरवल्स थ्रू आउट अ पर्टिकुलर पोएम है ना थ्रू आउट द पोएम जो चीज जो रिपीटिंग पार्ट ऑफ द पोएम है उसे हम कहते हैं रिफ्रेन अ रिफ्रेन में अपीयर एट द एंड ऑफ ईच स्टैंजा और एट लीस्ट ओके सो अ फ्रेज repeated at intervals throughout the poem. A refrain may appear at the end of each stanza or at less regular intervals. It may be altered slightly at each appearance. Some refrains are nonsense expressions, as would nevermore in Edgar Allan Poe's The Raven, that seem to take on a different significance with each use. ये रहा आपका refrain.
नेक्स्ट है रेनेसा, ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने पूरा एक पीडीएफ कर रखा है रेनेसा के ऊपर। द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री इट मार्क द एंड ऑफ द मिडिल एजेस। Okay, let's let's move forward. तो where are we? रेनेसा है ना, हम रेनेसा पे हैं। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री that marks the end of Middle Ages, है ना, it marks the end of Middle Ages. It began in Italy in the late 14th century. It, in broad terms, is usually seen as spanning the 14th, 15th, and 16th century. So बहुत बड़ा था, है ना. Although it did not reach Great Britain, for example, until the 1480s or so. The Renaissance saw an awakening in almost every sphere of human activity, especially science and philosophy and the arts. The period is best defined by the emergence of a general philosophy that emphasized the importance of the intellect, the individual, and the world affairs. देखिए रणजा का मतलब भी ये है ना, न्यू बिगिनिंग एक तरह से. It contrasts strongly with the medieval worldview characterized by a dominant concerns of faith, the social collective, and spiritual salvation. Prominent writers during the Renaissance were include excuse me, Niccolo Machiavelli, Balthazar Castiglione in Italy, Miguel de Cervantes, and Lope de Vega in Spain, Jean Froissart, Francis Rabelais in France, Sir Thomas More and Sir Philip Sidney in England, and Desiderius Erasmus in हॉलैंड. तो ये रहे आपके रेनेसा के राइटर्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसके बाद है रिपार्टी. अच्छा है ये. कन्वर्सेशन फीचरिंग स्नैपी रिटॉर्ट्स एंड विटिसिज्म. इसे हम क्या कहेंगे? रिपार्टी. मास्टर्स ऑफ. ओके. लेट मी सिट डाउन. एक सेकंड.
ओके, सो वी आर एट रिपार्टी। क्या होता है? कन्वर्सेशन फीचरिंग स्नैपी रिटॉर्ट्स एंड विटिसिज्म, है ना, चालाकी, कनिंगनेस। Masters of repartee include Sidney Smith, Charles Lamb, Oscar Wilde. An example is recorded in the meeting of Bew Nash and John Weasley. Nash said, "I never make way for a fool." To which Weasley responded, "Don't you? I always do," and stepped aside. So ये more of a repartee है ना, एक तरह से मुझे अपना विड दिखाने का तरीका है। नेक्स्ट है हमारा रेजोल्यूशन। क्या होता है? द पोर्शन ऑफ अ स्टोरी फॉलोइंग द क्लाइमैक्स, है ना, जो हमारा एंडिंग वो है, जो एक तो है हमारा राइजिंग राइजिंग वो क्या कहते हैं उसे हम, राइजिंग एक्शन एंड एक है फॉलिंग एक्शन। सो आफ्टर द क्लाइमैक्स फॉलिंग एक्शन जब स्टार्ट होता है तब कारण उस टाइम पे ही आता है। द पोर्शन ऑफ द स्टोरी फॉलोइंग द क्लाइमैक्स इन विच द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। द रेजोल्यूशन ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉटिंगर एबी, बहुत ही फेमस वर्क है इनका, is neatly summed up in the following sentence: Henry and Catherine were married, the bells rang, and everybody smiled. So, ये resolution. Next आपका revista. The Spanish term for एक सेकंड रुकिए, revista क्या है? Spanish term for ये म्यूजिकल है, एक सेकंड, for a vaudeville, ना? Okay. The Spanish term for a vaudeville musical review. Examples of previous stars include Antonio Guzman's sorry, Aguilera's Mexico para los Mexicanos, Daniel Vanegas Maldito Jazz, and Don Catarino's Whiskey, Morfina Y Marihua, if I guess Marijuana yoga anyway, and El Desperado. छोड़िए इसे, previous था, you get the point, एक form of Spanish वो है। लेट्स मूव नेक्स्ट, रिटोरिक है, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। क्या होता है रिटोरिक? रिटोरिक क्रिटिसिज्म, द टर्म डिनोट्स द आर्ट ऑफ एथिकल परसुएशन। इसके अंदर ही वी सी अरिस्टोटल के वो तीन कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं पैथोस, लोगोस और इथोस। रिटोरिक है ना, इन इट्स स्ट्रिक्टेस्ट सेंस rhetoric adheres to various principles developed since classical times for arranging facts and ideas in a clear, persuasive, appealing manner. The term is also used to refer to effective prose in general and theories of or methods for composing effective prose. Classical examples of rhetoric include the rhetoric of Aristotle, Quint- Quintilian's ins- sorry, Institutio Oratorio and Cicero's Ad Herennium। तो ये आपका हुआ रिटोरिक। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, आप जो है पैथोस लोगोस इथोस को भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, रिटोरिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट आ सकता है। क्या होता है रिटोरिकल क्वेश्चन? अ क्वेश्चन which is intended to provoke thought, है ना, when a particular person asks a question so that they can themselves answer that, है ना, वो just thought provoking है, it's not something to be answered। rhetorical question उसे कहते हैं। The question intended to provoke thought but not an expressed answer in the reader. It is most commonly used in oratory and other persuasive genres। Give me a moment, है ना। Okay, there's an option to use camera, है ना, I was thinking about this। Okay, sorry। So it is most commonly used in oratory and other persuasive genres। The most commonly used, the most, the following lines from Thomas Gray's elegy written in a country churchyard, बहुत ही famous work है। Ask the rhetorical questions: Can storied urn or animated burst back to its mansion call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust? Or flattery soothe the dull, cold ear of death? तो ये सारे rhetorical questions हैं, they are not really
डिमांडिंग आंसर, ये जस्ट थॉट प्रोवोकिंग है, सो मेंट टू बी लिसनड एंड अगर आप सोचिए इस बारे में तो ये बेटर है, बट दे आर नॉट आस्क्ड कि आपको जो है आंसर देना है। नेक्स्ट लाइन, डेफिनेटली इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं। when used as a noun in literary criticism, the term generally refers to a poem, rhyme, है ना, in which words sound identical or very similar and appear in parallel positions in two or more lines. Rhymes are classified into different types according to rhymes are classified into different types according to where they fall in the line or stanza or according to the degree of similarity they exhibit in their spellings and sounds. Some major types of rhymes are masculine rhyme, feminine rhyme, triple rhyme. In masculine rhyme, the rhyming sound falls in a single accented syllable, as with heat and eat. So heat, eat. Feminine rhyme is a rhyme of two syllables, one stressed and other one unstressed, as with mercy and Ted. Sorry, as with Mary and Ted. The triple rhyme matches the sound of accented syllable, and the two unaccented syllables that follow, narrative and declarative. Robert Brown, Robert Browning alternates feminine and masculine rhymes in his Soliloquy of the Spanish cloister. Grr, there go, my heart's abhorrence. What are your damned flower pots do? If hate killed men, Brother Lawrence, God's blood would not mine kill you. What? Your myrtle bush wants trimming? Oh, that rose has prior claims, needs its laden vase brimming. Hell dry you up with flames. Triple rhyme can also be found in Thomas Hood's Bridge of Sighs. जॉर्ज गॉर्डन बायरन, ये है लॉर्ड बायरन हमारे, उनका जो सटारिकल जो वर्स है, एंड ऑगडेन नैश कॉमिक पोएम्स. ओके, सो इस जगह में वी हैव राइम. नेक्स्ट राइम रॉयल, डेफिनेटली इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है. क्या होता है? स्टैंजा ऑफ सेवन लाइन्स. मेक श्योर कि आप ये इसमें मिस ना करें, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. सो a stanza of seven lines composed in iambic pentameter and rhymed ABBCC. The name is it's the name is said the name is said to be a tribute to King James, one of Scotland, who made much use of the form in his poetry. Examples of rhyme royal include, सबसे रैंक वन जो इसका एग्जांपल है वो है जॉफरी चौसर का द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, है ना, ये अपने रैम रॉयल से जाना जाता है. विलियम शेक्सपियर का द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी. विलियम मॉरिस का अर्ली द सॉरी हाय सर या हाय हाय. ओके, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये रैंक वन आपका एग्जांपल है. विलियम मॉरिस द अर्ली पैराडाइज एंड जॉन मैशफील्ड्स द विडो इन द बाय स्ट्रीट. तो ये रहा आपका रैंक रॉयल. अगेन रैंक वन एग्जांपल आपको चौसर का देंगे तो ही बेटर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अगेन ऊपर वाला एक बार पढ़ लीजिए. A stanza of seven lines composed in iambic pentameter and rhymed A B नेक्स्ट है रिदम. तो रिदम, टोन एटसेट्रा ये भी आने वाले हैं. रिदम क्या होता है? A regular pattern. How are you doing live without completion of 1K subs? Well, to do live आपको 1K subs नहीं चाहिए, है ना. आई डोंट थिंक कि आपको 1K subs चाहिए टू डू लाइव. मैंने दोनों ही ट्राई कर रखे हैं ना, सॉफ्टवेयर से भी और नॉर्मल भी, है ना. क्योंकि मैंने रिसेंटली आज ही एक नॉर्मल लाइव भी किया था. सो आई डोंट थिंक कि आपको 1K कंप्लीट करना होता है. एक बार चेक कर लीजिए. चाहिए, बट देन ऑब्वियसली बात है ना, मेरे 1K नहीं है, बट सिर्फ ये लाइव ही है.
एक बार चेक कर लीजिए, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही है, मे बी इसमें कुछ और क्राइटेरिया होगा। आई गेस जब मैंने स्टार्ट किया था तब देयर वाज दिस मैसेज कि मुझे 50 चाहिए, सिर्फ आपको 50 जो है सब्सक्राइबर्स चाहिए बिफोर यू गो लाइव, है ना? टू टू गो लाइव आपको 50 चाहिए, आपको 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड देन यू कैन स्टार्ट। आई डोंट थिंक आपको 1K चाहिए टू 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 गेट मोनेटाइज, है ना? कि अगर आपको मोनेटाइजेशन चाहिए देन आपको 1K चाहिए। यू हैव टू गेट 4,000 वॉच आवर्स एंड 1K सब्सक्राइबर्स, देन आपका जो है मोनेटाइज हो जाएगा। बट लाइव जाने के लिए आपको सिर्फ 50 चाहिए, सो इफ यू हैव 50 सब्स देन आप लाइव जा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिदम, a regular pattern of sound, a regular pattern of sound, time intervals, or events occurring in writing, most often and most discernibly by, अब मैं जा रहा हूँ और अब तो जीरो वॉच होगा, या कोई बात नहीं, डोंट वरी, इट्स ओके, यू कैन गो। ओके सो, हाँ तो ये है रिदम, a regular pattern of sound, time intervals, or events occurring in writing, most often and most discernibly in poetry. Regular, reliable rhythm is known to be soothing to humans, while interpreted unpredictable or rapidly changing rhythm is disturbing. These effects are known to authors who use them to produce a desired reaction in the reader. An example of a form of irregular rhythm is sprung rhythm. ये भी हम लोगों ने पहले कर रखा है. And sprung rhythm poetry, quantitative verse, on the other hand, is very regular in its rhythm. Okay, let's okay, let's read this. I'm guessing कुछ criticism होगा. आपको अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है, मैं थोड़ा फन और पिक्चर्स भी लगाना होगा टेक्स्ट के साथ. या आई विल ट्राई, थैंक यू. ओके सो ये हमारा रिदम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, राइजिंग एक्शन. तो जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जब भी हमारा हमारा हम कोई प्लॉट करते हैं, सो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स टू इट. एक राइजिंग एक्शन, देन वी हैव क्लाइमैक्स, एंड वी हैव फॉलिंग एक्शन, है ना? तो राइजिंग एक्शन उसी का पार्ट है जब वो बिल्डअप हो रहा होता है ना, क्लाइमैक्स तक. सो द पार्ट ऑफ अ ड्रामा वेयर द प्लॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड, है ना? हीरो को बहुत कुछ स्ट्रगल वगैरह देखना पड़ता है, तब का ये है राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन लीड्स अप टू द क्लाइमैक्स और turning point of a drama. The final chase scene, or sorry, of an action film is generally the rising action, which culminates to the film's climax. तो climax से पहले का जो पूरा का पूरा plot है, it's the rising action. Next is Rococo, a style of European architecture that flourished in the 18th century, especially in France. The most notable feature of Rococo are its extensive use of, sorry, um, ornamentation and its themes of lightness, gaiety, and intimacy. In literary criticism, the term is often used disparagingly to refer to a decadent or over ornamental style. अलेक्जेंडर पोप का जो द रेप ऑफ द लॉक है, ये एक अच्छा एग्जांपल है लिटरेरी लुक होगा. क्यों? क्योंकि इसमें भरे हुए हैं ना ये जो ऑर्नामेंटेशन है एक्सेट्रा, एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑर्नामेंटेशन है, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, रोमन ए क्लेफ. अगेन नॉट समथिंग जो आपको आपके टर्म्स में या आपके शॉर्ट नोट्स में आपको आएगा, बट स्टिल नॉलेज इज नॉलेज. A French phrase meaning novel with a key. So roman is like novel. A clef is with a key. Novel with a key, है ना? आप जब बिल्डिंग्स रोमन पढ़ते हैं तो वो डेवलपमेंट वाला नॉवल है ना, तो रोमन का मतलब नॉवल ही होता है. Okay, so Roman, a clef is a novel with a key. It refers to a narrative in which real persons are portrayed under fictitious names. For example, we have Jack Kerouac, for example, portrayed various real life Beat Generation figures under fictitious names in his On the Road. On the Road Beat Generation में ही आता है, बहुत ही फेमस वर्क भी है. इसको हम लोगों ने बीट जनरेशन को पढ़ते हुए कवर किया था.
ओके, नेक्स्ट है वो हमारा रोमांस। गेस एक या दो हम शॉर्ट नोट्स और कर पाएंगे। लेट्स डू इट। सो नेक्स्ट इज रोमांस, अ ब्रॉड टर्म usually denoting a narrative with exotic, exaggerated, often idealized characters. ठीक है, often idolized characters, scenes, and themes. Nathaniel Hawthorne called his The House of the Seven Gables and the Marble Faun romances in order to distinguish them from clearly realistic works. Again, ये दो इनके famous works हैं। दो इनके अलावा उनका जो सबसे famous work है वो द स्कारलेट लेटर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रोमांटिसिज्म, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑब्वियसली पूरा पीडीएफ कर रखा है। स्टार्ट करते हैं। द टर्म हैज टू वाइडली एक्सेप्टेड मीनिंग्स रोमांटिसिज्म का। इन हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म it refers to a European intellectual and artistic movement in the late 18th and early 19th centuries that sought greater freedom of personal expression that allowed that allowed by the strict rules of literary form and logic in the 18th century neoclassicists. The Romantics preferred emotional and imaginative expression। इसमें इंडिविजुअलिज्म को बहुत जो है एक्सप्लोर किया गया है। अगेन इसमें वो भी है कि नेचर में जो है गॉड को ढूंढना एटसेट्रा। सो रोमांटिक्स प्रेफर्ड इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन टू रैशनल एनालिसिस, है ना, इसके अगेंस्ट वो आए थे रैशनल एनालिसिस के। दे कंसिडर्ड द इंडिविजुअल टू बी एट द सेंटर ऑफ ऑल एक्सपीरियंस एंड सो प्लेस हिम और हर एट द सेंटर ऑफ देयर आर्ट। The Romantics believed that the creative imagination reveals nobler truths, unique feelings, and attitudes than those that could be discovered by logic or by scientific examination. Both the natural world and the state of childhood were important sources for revelations of eternal truths. Romanticism is also used as a general term to refer to a type of sensibility found in all period of literary history and usually considered to be in opposition of the principles of classicism। क्योंकि classicism के बिल्कुल opposite था ये, इसमें हम लोग जो है individualism explore कर सकते थे, more freedom था, है ना, रूल से उतने बाउंड नहीं थे। In this sense, Romanticism signifies any work or philosophy in which the exotic or dreamlike figure strongly or that is devoted to the individualistic expression, self-analysis, or a pursuit of higher realm of knowledge that can be discovered by human reason। प्रोमिनेंट रोमांटिक इंक्लूड जीन जैक्स रॉसियो है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, लॉर्ड बायरन है, जोहान वुल्फगैंग वॉन गॉटी हैं, ऑब्वियसली बात है, और भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव सटायर। ओके, सो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सटायर से। विल एंड दिस सेशन राइट नाउ, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम लोग सटायर से कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। या ओके।